Okay, dear friends, good evening. How are you? Actually, after a break, and possibly it appears that I have, it seems that possibly I have appeared after such a long time because there was some time gap between us due to the long holidays, and then Saturday, Sunday, then long holidays. So it is giving a feeling of a long separation. So now come to the point, my friends. Actually, we are going across the topic Mughal architecture. So we have touched simply at the era of Akbar, possibly Mr. Ankur Akbar. Yes. And then today we have to reach up to Shah Jahan, and then we have to move towards paintings. So now in 1 and 2 classes, the medieval part, the part third will be finished. Then for the modern part, I have already finished. So some cultural aspect of modern I have to discuss in the 2 classes more. So I surmise that possibly 4 to 5 classes are left now, and we are just nearing the syllabus. So let us start here once again. जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन है MCQ में कि which of the following are associated with Tughlaq architecture? Point 1, use of sloping walls, to use of red stone, and point 3, foundation of big cities. And my students, choose the correct code. Choice A 1 and 2, choice B 1 and 3, choice C 2 and 3, and choice D 1, 2 and 3. So you have to find it out, the answer, exact answer. So Mr. Ankur, where there is even the website is working here? Working तो उस समय भी है, but comments same है. Okay. Maximum B. Maximum B. Yes, correct answer. You have done a very correct answer, my friends. Question number 2. During Sultanate period, which of the following is the first architectural monuments in which white marble was used? Choice A, tomb of Iltutmish, choice B, Alai Darwaja, choice C, tomb of Sikandar Lodi, and choice D, tomb of Balban. So my friends, you have to find it out. Be fast. Maximum B. B. Yes. Question number 3. Which of the following materials were used for building construction during the Sultanate period? Point 1, lime paste, point 2, gypsum, point 3, wet soil, gili mitti, and choice D 4, you can say in gili mitti, or here you can use the term mud mortar. Mud. मतलब कच्ची मिट्टी, गीली मिट्टी. And point 4, granite. You are having the choice, choose the correct code. Choice A 1 and 2, choice B 2 and 4, choice C 1, 2 and 3, and choice D 1, 2, 3 and 4. Maximum C. Maximum C. No, not C. Gypsum and lime paste. A. Granite is not the right answer. You'll find that the gypsum and lime paste. Chuna. Etha. Yes, that is the correct answer. Question number 4. Which of the following tombs have a double dome? Alai Darwaja, choice B, tomb of Iltutmish, choice C, tomb of Balban, and choice D, tomb of Sikandar Lodi. Sorry. Sorry. Be fast, my friends.
What is, yeah? D. Choice number D. Choice number D is the correct answer. That is correct. Question number 5. Assertion. Babur commissioned a limited number of architectural monuments. Limited number of architectural monuments in India. Reason: he was convinced that Indian architecture lacked a sense of balance and proportion. Balance and proportion. Be fast. C और D में है but maximum C है. Babur commissioned a limited number of architectural monuments in India. That is correct. And he was convinced about the fact that Indian architecture lacked a sense of balance and proportion. So this is correct, even this is correct, but not the explanation. So choice B is the answer. अगर बाबर बहुत ज्यादा मॉन्यूमेंट्स इंडिया में नहीं बना सका तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह नहीं थी कि उसको यहाँ के आर्किटेक्चर में बैलेंस नहीं लगा या प्रोपोर्शन नहीं दिखा. तो आप ठीक है, नहीं आपको पीछे के मॉन्यूमेंट्स में दिखा तो आप तो और नए मॉन्यूमेंट्स बनवा दीजिए और अब दिखा दीजिए कैसे बैलेंस और प्रोपोर्शन आता है. तो आपके पास तो चॉइस थे, लेकिन नहीं, उसने इसलिए ज्यादा मॉन्यूमेंट्स नहीं बनाए कि ही वॉज लैकिंग इन टाइम. He was too much busy in the battlefield, so that's why he could not build too many monuments during his time. So this is the reason कि that's why we cannot give the whole credit for the fact that he find the lacking of balance and proportion in Indian monuments, so that's why he didn't dare to do so. So here the answer is choice number B is the answer. And A is correct, R is correct, but R is not the correct explanation for A. Or Mr. Ankur, okay? Yes. Ab you are going through the architecture, Sultanate period, you have moved towards Akbar's monuments. Babur, Humayun, then I moved to Akbar. Just 1 minute. Just come to this point. The era of Akbar was marked by the construction of series of monuments. During the period of Akbar, there was greater assimilation between Arcuate style and Tarbiyat style. I have just shown you basically Akbar used basically Tarbiyat style for construction of architecture, but only with decoration purpose he used Arcuate style. मतलब अकबर ने मुख्य रूप से अपना जो आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स का उसने जो डेवलप किया, उसमें उसने मुख्य तरीका धार्मिक शैली या शाहतीरी शैली का अपनाया, जिसको आप कहते हो त्रैवित स्टाइल, जो इंडिया का एग्जिस्टिंग स्टाइल था, और बस केवल और केवल डेकोरेशन के लिए ही एसिमिलेटेड सम आर्कुएट स्टाइल. सो हियर यू कैन गिव मोर क्रेडिट टू अकबर फॉर मेकिंग द ट्रूली इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, एंड his architecture is verging towards India and less towards Islamic elements, and more towards Indian elements. So this was the specialty of Akbar's monuments. Point number 3, Akbar preferred to do construction works in outside of capital Delhi. मतलब he preferred
to build more and more monuments outside of capital Delhi, you can say. For example, you can say Agra, Allahabad, Lahore. He built forts at Agra, at Allahabad, at Lahore, at Attak near Peshawar, and then Fatehpur Sikri. So he built so many monuments there. Then he assimilated regional styles. For example, you can say Gujarati style, Bengali style, you can say Rajput style. He assimilated in his architecture. You find there, for example, you can say in Fatehpur Sikri. I'm just showing you the Akbars. This is the Agra fort, you know, and it was Jahangiri Mahal made of red sandstone, you know, and then this was mainly the use of Traviat style, that is pillars and beam, use of pillars and beam, and arcuate style and the arcuate elements only for decoration purpose. तो इसने मुख्य रूप से त्रैवित स्टाइल का यूज किया, परंतु डेकोरेशन के लिए केवल आर्कुएट स्टाइल का यूज किया इसने। अब देखो ये अकबर का है, लेकिन इसको फिर रिबिल्ड किया है शाहजहां, तो इस पर अब गौर मत करिए, इसको इग्नोर मारिए। अब यहां पर आइए फतेहपुर सिकरी, दैट इज द सेकेंड वन, दैट इज बुलंद दरवाजा। इट वॉज बिल्ट, यू कैन से it was built, you know, basically in commemoration of the victory, Akbar's victory at Deccan in 1602. It was built because the whole Fatehpur Sikri was built in commemoration of Akbar's victory in Gujarat, because construction work started in 1575-76. But this Buland Darwaja was built after Akbar's conquest of Deccan in 1602. So this was here the limited use of marble as well at the head you find. Limited use of marble. Then Diwan-e-Aam Fatehpur Sikri. Here you find the pillars. अब इसको आप ऑब्जर्व करके देखिए, आप किसी हिंदू के घर का बरामदा दिखेगा, देखो ये है शाहतीरी स्टाइल, यू नो, इट वॉज बीम, दिस इज पिलर, दैट इज दीवान-ए-आम फतेहपुर सिकरी। दीवान-ए-खास, क्योस, हियर यू फाइंड प्रोजेक्शन कहते हैं छज्जा को, ये भी इंडियन स्टाइल है। एंड इन इनर यू विल फाइंड द त्रैवियत style, and only for decoration arcuate style, you know. Panch Mahal Fatehpur Sikri, it was built on Buddhist style. अब देखो, whenever that in Fatehpur Sikri you find here the tomb of Sheikh Salim Chishti, so you will be surprised that Akbar didn't prefer to build a complete monument in marble. He didn't prefer to carve out a monument in marble, you know. Normally, if suppose in Buland Darwaja there was limited use of marble, so it was the very slight or minimum use of marble. But he will never prefer to build a monument completely in marble, and particularly you can say कि that is marble net, जिसको संगमरमर की जाली कहते हो, तो अकबर ने कहीं भी यूज नहीं किया। तो आप फतेहपुर सिकरी जाओगे तो फिर आप सरप्राइज हो जाओगे कि भाई ये तो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह है, तो अकबर जब मार्बल यूज नहीं किया इतना मैसिव स्केल पर, तो ये कैसे बना? सो बेसिकली अकबर बिल्ट दिस दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती अर्लियर, एंड इट वाज पॉसिबली मेड ऑफ द रेड मार्बल, द रेड स्टोन, बट इट वाज रिकंस्ट्रक्टेड और रिबिल्ट बाय जहांगीर इन व्हाइट मार्बल, and it was Jahangir who preferred white marble, you know. So this is the region, that is Dargah of Sheikh Salim Chishti. This is the open courtyard of Fatehpur Sikri. Whenever I stood here for the first time, so I felt that the magnificence of Akbar. From every corner there was the smell of the magnificence of Akbar. I was, you can say, dumb and deaf for some time after observing the magnificence of Akbar, and I simply visualized what was the scenario at the time of Akbar while standing in this courtyard. So some scholar has rightly quipped Akbar's monuments, Akbar's reflected through his red sandstone the strength and sublimity of his empire.
strength and sublimity of empire of Akbar was reflected in his monuments. And Akbar's monument is reflecting or reflected an empire in making, कि as if some empire was in making. मतलब अकबर की जो आर्किटेक्चर है, जो मॉन्यूमेंट्स है, वह एक बनते हुए साम्राज्य की झलक देते हैं कि एक साम्राज्य बन रहा है, उसकी झलक उसके मॉन्यूमेंट्स में मिल रही है. Actually, in Fatehpur and Sikri, in Fatehpur you will find Buland Darwaja, Jami Mosque, where Akbar for the first time read khutbah himself. तो जामी मॉस्क आपको मिलेगा इसमें. द दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती. So all are visible in Fatehpur. That is Fatehpur. Sikri is 200 meters separate from Fatehpur, and the rest of the monuments are visible. Of that is called Palace of Jodhabai. This is the Palace of Jodhabai in the Hindu style, find here. The projection, the chaos, etc. This is the kitchen of Jodhabai. Presently, you can say tourist department has done some try in order to attract the tourist, and particularly the foreign tourist here. You can say कि in this kitchen, some, you can say, bajre ki roti was being prepared by some, you can say, some expert, and she was sitting here in this kitchen, and she was just preparing this bajre ki roti and putting the bajre ki roti in the pure ghee, and then that is offered to the tourist, so that ki tourist would be attracted. And ये अजब एक, चूंकि राजस्थान की है जोधाबाई, तो जो राजस्थानी फूड या राजस्थानी डिश को इसमें सर्व किया जाता है. राजा बीरबल पैलेस, दैट इज अब जहांगीर्स आर्किटेक्चर, यू कैन से. So in the last, I can say, in the point number 5, I have to make you clear in the point number 5 कि Akbar's monuments reflected strength and sublimity. Sublimity of his empire. Sublimity of his empire. In fact, it gave a glimpse of empire in making. मतलब आपको बताया जा रहा है कि अकबर का जो स्थापत्य है उसमें एक बनते हुए साम्राज्य की झलक मिलती है, कि एक साम्राज्य है जो बन रहा है, उसकी झलक हमें अकबर के स्थापत्य में मिलती है. तो ये हुआ अकबर्स मॉन्यूमेंट्स एंड हिज पीरियड. देन वी आर कमिंग टू जहांगीर. In the literature I have already given about Jahangir, but Jahangir's monuments and Jahangir's architectural monuments. अब do you know कि फीचर्स, ये मैंने आपको इसमें मैटर में दिया हुआ है.
During the reigns of Jahangir and Shahjahan, a gradual development in architectural styles can be observed. While Akbar's architecture radiated power and grandeur, the architecture of Jahangir and Shahjahan embraced a more delicate and feminine beauty. Delicate and feminine beauty, you can say. Notably, three significant structures were constructed during Jahangir's era: Akbar's tomb in Agra, tomb of Abdur Rahim Khan Khana in Delhi, and tomb of Itmaduddaulah in Agra. Jahangir emphasized specific methods of ornamentation and decoration. Use of marble in net, marble net, you can say. Marble net. संगमरमर की जाली, जैसे संगमरमर की जाली मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अभी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में आपने संगमरमर का छोटा छोटा से जाली की तरह से बना के जो रखा हुआ, उसका जो विंडो है उसमें संगमरमर की जाली बनाई जाती है। वो पहले जहांगीर ने शुरू किया था, मार्बल नेट। एंड यूज ऑफ पित्रादुरा। पित्रादुरा को हिंदी में बोलते हैं पच्चीकारी। मैं आपको समझा देता हूं। इट वॉज नॉट पेंटिंग्स, पित्रादुरा वॉज नॉट पेंटिंग्स, पित्रादुरा वॉज व्हाट? इट वॉज इनले वर्क। जो पित्रादुरा है वो पेंटिंग्स नहीं, वो इनले वर्क है। वो कैसे इनले वर्क है? जैसे आप सपोज करो, आप कल्पना करो ये वॉल है, कल्पना करिए, एंड आप एक काम करिए, एक छेनी और हथौड़ी लेके, हैमर्स, यू आर टेकिंग हैमर इन वन हैंड एंड ब्यूरियंस इन अनदर, एंड देन यू हैव टू कट इट इन this wall should be cut into the size of a flower. Okay, so you have cut into the size of the flower and the background is white. So you are just placing and inserting in this hole. You have just cut, cut hole. You are inserting yellow, red, blue and different colors of marble. So you are doing the inlay work, so it is giving a perfect look of a flower in the wall. So that is called पित्रादुरा। इसको पच्चीकारी बोलते हैं। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम पेंटिंग्स। इसको इनले वर्क कहते हैं पित्रादुरा को, जो बना हुआ है। It was during this period that construction of white marble building began, which were subsequently adorned with intricate designs of semi-precious stones in the form of flowers and leaves. वो जो उसमें इनले वर्क जो किया जाता है वो सेमी प्रेसियस स्टोन होता है, अर्धकीमती पत्थर उसमें होता है। जैसे आप दीवार को एक फूल के साइज में काट दो, ओके, छेनी हथौड़ी से काट दो, और उसमें ब्लू कलर का, रेड कलर का, येलो कलर का, दूसरे कलर के जो सेमी प्रेसियस स्टोन है, जो अर्ध बहुमूल्य पत्थर है, उसको उसमें आप भर दीजिए, तो उसका जो लुक आएगा वो कंप्लीट फ्लावर का लुक आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये है इसका। तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे जहांगीर, तो फीचर्स में आपको more emphasis over decoration and delicacy. Point to use of marble with decoration purpose. Point third, use of marble net and pitradura. Use of marble net and pitradura, that is called pitradura, and that's all. So these were the features: use of marble net and pitradura. Then you can see monuments. In monuments, in Jahangir could not give much time for construction of monuments. He was more absorbed in paintings. But at least during the period of Jahangir, you will find the three examples of the important monuments. One is Akbar's tomb. Although here I have to inform you that Akbar himself did the
Akbar himself did the base work of his tomb at Sikandara in Agra. You are moving to Agra, so Delhi to Agra highways. So just 5 kilometers earlier than Agra, 5 kilometers earlier than Agra, in the left hand on the highways you will find Sikandara, his tomb. So base work and design and base work was done by Akbar himself, and Akbar also built the first floor, but the next 2 floors were built by Jahangir. So here Jahangir did the major work, but Akbar was the main designer as well as the main builder of this monument, Akbar's tomb. Second one, his father-in-law and the father of Nur Jahan, that was Etmaduddaulah. Etmaduddaulah was his title. His earlier name was Giyas Beg. I have discussed with you. Etmaduddaulah's tomb. So Akbar's tomb in Agra, Etmaduddaulah's tomb in Agra, and third, tomb of Abdur Rahim Khan Khana. Abdur Rahim Khan Khana. तो देखो, tomb of Abdur Rahim Khan Khana, it is in Delhi. Actually, it is a quite, you have to be mentally alert ki which important monument is lying where. Because I have to inform you ki basically sometime you will find in the exam ki very silly type of question and you are doing silly type of mistake. They will ask you the question ki where was Jahangir's palace or Jahangiri Mahal? Where was Jahangiri Mahal situated? Choice A in Agra's fort, choice B in Fatehpur Sikri's fort, choice C in Allahabad's fort, choice D in Delhi's fort. So up there you will getting confused ki where is Jahangiri Mahal, and particularly you will find a confusion between Fatehpur Sikri and Agra. I am leaving you guessing here. I will not give you the answer. Possibly I will ask this question tomorrow. So here I am leaving you guessing. So suppose you can say you find here the Abdur Rahim Khan Khana, his tomb at Delhi. So it is important for you to take notice of कि where important monument is situated, either in Agra, Delhi, Fatehpur Sikri or wherever. क्योंकि देखो पीटी में क्या होता है कि कई बार हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है. एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, जैसे अब जोधाबाई का महल कहां बनवाया, तो अब आगरा के फोर्ट में बनवाया, फतेहपुर सिकरी के फोर्ट में बनवाया, इलाहाबाद के फोर्ट में बनवाया या अटक के फोर्ट में बनवाया. तो दैट विल क्रिएट अ कंफ्यूजन इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. सो यू हैव टू टेक नोटिस हियर. ओके, तो दिस इज जहांगीर्स मोन्यूमेंट. Akbar's tomb at Sikandara you find. Up here the base work, 1, 2nd, 3rd floor. 3 floors were built by Akbar himself, not first floor, 3 floors. And the 4th floor marble, white marble. It is indicative of the fact that कि Jahangir, this part has been built by Jahangir. तो देखो अकबर्स जो है वो मल्टी स्टोरीज है. इसमें उसने डोम का यूज नहीं किया है, क्योस का किया है, डोम का यूज नहीं किया है. And this was the entrance, entrance gate and 4 minarets, 4 powerful and visible minarets in the main gate. You will make entry from here, and that is the campus. And this is Etmaduddaullah's tomb. It was a father-in-law of Jahangir. और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ऐसा कौन सा मोन्यूमेंट है जिसमें थॉरोली पित्रादुरा का यूज किया गया है, तो पहला मोन्यूमेंट जिसमें पित्रादुरा का यूज किया गया है यही है. दैट इज एतमादुद्दौला's tomb. अकबर्स टॉम की विशेषता है कि इट वॉज रिफ्लेक्टिंग इट वॉज रिफ्लेक्टिंग कि द some sort of religious assimilation. For example, you can religious tolerance, because in this tomb you will find out the Hindu styles, the Islamic styles, and even Christian, because that is compared with Masihi cross, the Christian cross. देखो here you in the main gate you find here कि that is the reflection of Christian cross. So truly it reflected the Akbar's character. कि as Akbar maintained the religious tolerance,
So even his monument is and his tomb is going to reflect the same sense of religious tolerance, you know. Etmaduddaullah's tomb. This is the, you know, first monument where there is the use of white marble. देखो, white marble and the Pitradura. देखो, that is Pitradura, but is not clearly visible. Later I'll show you. This is tomb of Abdur Rahim Khan Khana at Delhi. It is at Delhi. अब शाहजहां पीरियड. शाहजहां पीरियड आर्किटेक्चर. शाहजहां periods architecture. During the reign of Shah Jahan, a profound interest in architecture was evident. He undertook the construction of various forts and buildings, notably demolishing Akbar's structures within Agra fort and replacing them with new white marble edifices. Furthermore, he founded a new capital called Shah Jahanabad in Delhi, where he built the magnificent Red Fort along with numerous other buildings. Shah Jahan's affinity for white marble persisted and he adorned his structures with white marble lattice and pitradura. In addition, he introduced a new method of decoration characterized by use of multi-layered arcs. देखो, multi-fold arc बेहतर है यहाँ पर. Use the term multi-fold arcs. I am making clear. देखो, you come to know कि what you know as truly a marble age. So truly marble age came into existence during the period of Shah Jahan, you find. The truly marble age, you know. And once the truly marble age started, so in Shah Jahan monuments, in Shah Jahan's monuments, you find that there was more and more emphasis over decoration. In decoration, the marble net and pitradura, which had started during the, and whose construction has started during the period of Jahangir itself. So these styles continued even during the period of Shah Jahan. So that was clearly visible. But simultaneously, I have to make you clear that apart from that, you will be clear about the fact that apart from that, you have come to the period of Shah Jahan. So even at the time of Shah Jahan, the same formula, the same features continued. But additionally, Shah Jahan introduced a new style that is called multi-fold arc. उसको बोलते हैं बहुस्तरीय मेहराब. जैसे शाहजहां के टाइम का जो मेहराब आप देखेंगे, वह मेहराब में कोई एक कर्व नहीं है, बहुत सारे कर्व हैं. तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी. The most remarkable creation of Shah Jahan's era is the Taj Mahal. It embodies almost all the distinctive features of Mughal architecture, including Charbagh. उसको चाहरबाग बोलते हैं. चाहरबाग style garden layout, use of double layered dome, any double dome, except double dome is enough. Use of decorative chhatris, umbrellas. Decorative chhatris, umbrellas, you can see kiosks, and use of pitradura for decoration, use of high platform for buildings. तो ये सब here I am making clear. The architectural monuments under Shah Jahan. This period was remarkable. This period was remarkable from the viewpoint of building activities.
building activities, building activities. Okay. अब here you find कि Shahjahan did the first construction works. Construction works at Agra Fort. In Agra Fort, what did he do? Actually, he demolished almost all the monuments of the Akbar's period in Agra's fort and restruck them into white marble. So today you will enter into Agra's fort. So you will come to realize that except Jahangiri Mahal, which was originally standing there and which is in white marble, which is in red stone, but all the other visible monuments are made of white marble. So that is reflective of the fact that these monuments might have built by Shahjahan. मतलब जो बाकी आपको मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे वह मॉन्यूमेंट्स आपको व्हाइट मार्बल के दिखेंगे, मतलब श्वेत संगमरमर के, और केवल एक जहांगीरी महल आपको रेड स्टोन का दिखेगा, जो दर्शाता है कि यह अकबर के टाइम का है, बाकी जितने भी है वो शाहजहां के टाइम के। और तो ये है, तो एक तो आगरा फोर्ट में, और उसके बाद खैर छिटपुट काम तो कहीं कहीं करवाया है, लेकिन मेन काम उसने ही बिल्ट न्यू कैपिटल शाहजहांबाद एट दिल्लीज लाल किला एट दिल्ली। अब इन दिल्ली में 1639 में वो कैपिटल लाया था, मतलब शाहजहांबाद बनाया था। तो हियर यू फाइंड जामा मॉस्क, रेड फोर्ट। इन रेड फोर्ट अ लॉट ऑफ मॉन्यूमेंट्स, यू कैन से दीवाने आम, दीवाने खास, द शाही हमाम। So many monuments were built within, you can say, this red fort. And mainly you can say features. Much more decorative in nature, a truly marvel age, started during the period of Shahjahan. A truly marvel age started during the period of Shahjahan. During the period of Shahjahan, you can say. Okay. A truly marvel age started during the period of Shahjahan. अब point 2, marvel net, come to realize here marvel net and the use of Pitradura, Point 3,
multifold arc. This is with the multifold arc. What is multifold arc? इसको बोलते हैं हिंदी में बहुस्तरीय मेहराब। अब कैसे बहुस्तरीय मेहराब है या मल्टीफोल्ड आर्क। और संगमरमर की जाली मार्बल नेट का समझ रहे हो और पित्रादुरा पच्चीकारी समझ रहे हो। अब मैं आपको विजिबल दिखाऊंगा, फिर समझ में आएगा। आपको यहां पर दिखाना होगा कि शाहजहांस architectural monuments reflected delicacy and feminine beauty. It expressed the abundance and luxury of an stabilized and confident empire. अब ये क्या है स्टेबिलाइज्ड एंड कॉन्फिडेंट एम्पायर? जैसे देखो अकबर के मॉन्यूमेंट्स में आपने देखा है बनते हुए साम्राज्य की झलक है। तो शाहजहां का जो मॉन्यूमेंट्स है उसमें एक इस्टेब्लिश्ड एम्पायर जिसमें अब कॉन्फिडेंस आ चुका है और जो अब लग्जरी और एबंडेंस की तरफ उन्मुख है, मतलब उसमें एक ऐश्वर्य है। जो शाहजहां के आर्किट मॉन्यूमेंट्स है उसमें एक प्रकार का ऐश्वर्य का सेंस है। तो ये दोनों को कंपेयर करते हुए मैं एक क्वेश्चन डालूंगा आज कल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, तो उस क्वेश्चन को आप लोगों को कवर करना है। ओके, अब शाहजहां का मॉन्यूमेंट्स मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यही है मल्टीफोल्ड आर्क, देख रहे हैं मल्टीफोल्ड विजिबल है। आप यहां देखो फोल्ड बना हुआ ऐसे, ये प्रोजेक्शन है, ये क्योस है, जो पहले का स्टाइल है चला रहा है, प्रोजेक्शन है, क्योस है, बट मल्टीफोल्ड यहां पर आपको आर्क दिखेगा। ये देखो जामा मॉस्क है दिल्ली का, ये लाहौर फोर्ट मोती मॉस्क है। ये लाहौर फोर्ट कोटयार जहांगीर के टाइम का है, ये तो जहांगीर के टाइम का फोर्ट है लाहौर। मोती मस्जिद देखो, मोती मस्जिद दो हैं, मोती मॉस्क। वंस इज आगरा, इन मोती मॉस्क ऑफ आगरा वाज बिल्ट बाय शाहजहां, and there was one Moti mosque at Delhi which had to be built by Aurangzeb. Moti Masjid, Agra, that is Shah Jahan. This is Musamman Burj. It is, what is the specialty of Musamman Burj? Do you know? कि Shah Jahan, when he was imprisoned by Aurangzeb, so he was, you can say that was his prison. He was put into this shell, you know. So he used to sit here on a chair, and in the front side you will find that after even today this area is open, even still open. You will find that thus Taj Mahal was visible here. So he was sitting here on the chair. He was observing the Taj Mahal with a longing eye, and possibly he was recollecting his ideas. He was just, you can say, try to recall his youthful life. तो ये है, इसमें पहले सोने का कवर था, इसको ब्रिटिश इसको ले गए और इसकी जगह पीतल यानी ब्रास का एक कवर लगा दिया है। That is multifold arc. This is clearly visual, multifold arc, you know. दीवाने आम शाहजहां, दैट इज मल्टीफोल्ड आर्क। देखो मल्टीफोल्ड ऐसे,
This is multifold arc. That is with decoration purpose. This is Pitradura, visible Pitradura, inlay work. Observe here. In Diwane Am seat of the famed Peacock Throne, Agra. That is, Peacock Throne was, you can say, displaced from here, and it was carried to Iran by Nadir Shah after invasion. This is Red Fort, Delhi. Now, this is the climax of the Mughal architecture. All the features of the Mughal architecture are visible in Taj Mahal. In Chah Bahar style, Chah Bahar style. And it was in the center, behind in Chah Bahar style, there are the three routes from three sides, and a river is flowing from the backyard. So you will observe here, you will just go through, you will stand here, you will find that the river Yamuna was flowing behind. तो रिवर यमुना है, उसके पीछे बह रही है. Then you can say on the higher platform, that was one feature in Humayun tomb. Double dome, use of minarets, ताक यही है, and chaos, marble net, Pitradura, all are visible here in Taj Mahal of Shahjahan. After that, there was a decline after Shah Jahan, there was a decline in architectural monuments. Aurangzeb took it just like an extravagance. So he put a check over the further construction, So Shah Jahan was not enthusiastic for this construction of architectural monuments, but here I have to inform you that Shah Jahan after Shah Jahan, when Shah Jahan was put into prison by Aurangzeb, so Aurangzeb simply built three monuments. And the three monuments you people have to keep in your mind. One was the Badsahi Mosque at Lahore. मतलब कि औरंगजेब ने तीन ही मॉन्यूमेंट्स उसके बाद बनाए. एक बादशाही मस्जिद लाहौर में, दूसरा उसकी वाइफ थी रबिया दुर्रानी, उसका मकबरा, उसका टॉम बनवाया औरंगाबाद में, और तीसरा मोती मस्जिद उसने बनवाई दिल्ली में. आई एम मेकिंग यू क्लियर कि एक्चुअली औरंगजेब सिंपली बिल्ड थ्री आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स, एंड दिस इज पित्रादुरा, एंड Aurangzeb three monuments you find here: Moti Masjid, Moti Mosque in Delhi, Badsahi Mosque in Lahore, and tomb of Rabia Durrani, Aurangabad. देखो ये Rabia Durrani का tomb है. It was called the second Taj. It was called second Taj because it was on the model of Taj Mahal. But what an inferior quality material he could use, you can very well surmise after observing its pathetic condition. So he does not appear even to be honest to his wife. So he has the inferior quality of material he has just used. So that's why the blackish look you find on the monuments. This tomb of Rabia Durrani. शेर शाह का, ये शेर शाह ने कुछ बिल्ड किया है जो बाद में इसको लिंक किया गया है, जोड़ा गया है शेर शाह वाले. ये शेर शाह के मॉन्यूमेंट्स हैं और ये उसका शाशाराम में टॉम है. विजिबल हियर द Traviat style mainly, but Arcuate style. So he tried to assimilate both the Traviat and Arcuate style into his monuments, So that is in the river. I have mentioned about it. So that's all. My students, I am giving you 3 questions, but Ankur, are they clear or any confusion? No, sir. My students, are you clear? आर्किटेक्चर आप समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सो प्लीज मेक मी क्लियर. जान से पूछिए.
Mr. Ankur, what is the situation? Okay. Okay. Now I am placing here 3 questions, but I am giving you homework for 1 question. Sir, एक question. Yes. Abhishek Karan, sir, historians often argue that Taj Mahal is built on the remains of some Hinduistic architecture. How far is that question correct? Who? Abhishek. Abhishek. Abhishek, actually, it is very immaterial question, you can say. Actually, we are not having any conclusive evidence behind that, and even if it could happen, so it was a very common thing during medieval age, you know. Particularly, you can say Islam was always, you can say, making a claim of removing other sects and replacing it through Islam, you know. So in the Islamic tradition and medieval history, it is a very common type of thing. And your query or your question is hardly to do anything with the exam question. It is basically an issue which is being discussed at political jalsa and political conference, you know. So it hardly matters. Anything? Model questions. 1. Mughal architecture truly reflected an Indo-Islamic style comment. This is very clear. You can find reference from the different monuments and different kings, and particularly you have to concentrate over Akbar, etc. Point 2, question 2. Taj Mahal a great piece of art Taj Mahal reflected the climax of Mughal architecture. इसमें आपको स्टैंड यह लेना है कि पीछे से जो स्टाइल्स और फीचर्स चले आ रहे थे, ताजमहल ने उन सारे फीचर्स और स्टाइल्स को अपने आप में एसिमुलेट किया. सो यू हैव टू मेक दिस पॉइंट क्लियर. एंड पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कि मेक comparative study of architectural monuments of Akbar and that of Shah Jahan. Sorry, Doge of Shah Jahan. अब ये थर्ड क्वेश्चन को आप लोग कल आंसर ट्राई करके लाइएगा. जो मैंने अकबर और शाहजहां का फीचर्स के साथ जो बताए हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स को भी आप कंपेयर कर सकते हो. एंड इन 250 words you can write here if you like. So question number 3 you people have to try for tomorrow. Will you do? Mr. Ankur asked my students, will they do? Okay. In
question number 3, will you try and bring the answer tomorrow? कोई मैसेज नहीं आ रहा, फिर कोई मैसेज नहीं आ रहा, मतलब मेरा नहीं आ रहा है कि उनका नहीं आ रहा है? उनका What problem? So my students, can I hope that tomorrow you will just bring and you will just try this question number 3 as the model question. You have to make a comparative study of architectural monuments of Akbar with those of Shah Jahan. yes, Yeah? yes, So you will try this question and you can. Very simple. I have talked about and discussed about all the features about the Akbar's monuments and Shah Jahan monuments, you know. Now medieval paintings. So I have just discussed with you earlier in part 2 all the paintings. You can see how the fresco, how the, you can say, right from the time of Bhimbetka paintings and Ajanta paintings. I have discussed with you how did fresco paintings evolve in India, you can say. That is called mural paintings. But then you can say after Ajanta, then you comes to Badami, Ellora, etc. So they were the example of mural paintings. But from 10th century onwards, there was the gradual decline of mural and fresco paintings and there was the emergence of the miniature painting. तो मैंने आपको बताया था कि 10वीं सदी तक जो स्तंभ चित्रकारी जिसको कहते हैं वो फ्लोरिश करता रहा, लेकिन जो 10th सेंचुरी है उसमें स्तंभ चित्रकारी का डिक्लाइन हो गया और इन प्लेस ऑफ स्तंभ चित्रकारी यू कैन से कि देयर स्टार्टेड मिनिएचर पेंटिंग. सो मिनिएचर पेंटिंग बिकेम प्रोमिनेंट. आई हैव जस्ट ऑलरेडी टॉट यू. And then I have talked about Jaina paintings. What was the region? Gujarat, Rajasthan, Bihar, Nepal, etc. UP, Nepal, etc. Then I have informed you that from Jaina paintings there was influence Gujarati paintings. I have discussed with you. ये मैंने part 2 में ही करवाया, इसमें फिर repeat है, इसको देख लिया होगा आप लोगों ने. तो Gujarati paintings in which there was the more emphasis over the portrayal of cloud, sun, etc. the earth and nature. And it influenced even the Rajput paintings later, Gujarati paintings. And the Gujarati paintings evolved into Chaur Panchasika style. I have discussed with you the Chaur Panchasika style, you know. And then this is the Chaur Panchasika style, I have told you. Champavati, Chaur Panchasika. In Chaur Panchasika, you can say this is called the Pothia style letter as well. When there is the story, and the story is the simultaneously written in the words and the simultaneously displayed in the paintings. तो जो चौर पंचसिका स्टाइल का पेंटिंग्स होता उसमें क्या होता है कि जो स्टोरी भी साथ में दिया होता, उसके साथ पेंटिंग्स के द्वारा उसके साथ में चित्रकारी भी की जाती. चौर पंचसिका पेंटिंग्स, यू नो, चौर पंचसिका. Historian paintings. Then this Chaur Panchasika style developed as the Pothi style, and this Pothi style became an inspiration behind the Mughal paintings as well. But before that, I have to inform you that earlier it was believed that possibly paintings were completely absent under Delhi Sultanate. Although I think even today the paintings of Delhi Sultanate is not so important कि they will ask you the question. It is clear कि दिल्ली सल्तनत का जो पेंटिंग्स है वह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कभी भी पूछेंगे, पीटी में भी नहीं पूछेंगे, मेंस में भी नहीं. लेकिन मैं आपको थोड़ी सी झलक दे देता हूं कि अर्लियर इट वाज बिलीव्ड दैट कि द पेंटिंग्स वर कंप्लीटली एब्सेंट अंडर दिल्ली सल्तनत, बट नाउ इट इज वाइडली बिलीव्ड नो, paintings existed even under Delhi Sultanate. Paintings existed there in Delhi Sultanate. And we find certain example of fresco painting. For example, Minhaju Siraj, I have mentioned earlier, he was an author and he was contemporary to Iltutmish, you know. And his text was Tabqat-e-Nasiri. I have discussed with you.
So in Tabaqat-e Nasiri, Minhaju Siraj has mentioned and described when Iltutmish sought the investiture from Caliph, because he was the first Sultan who got investiture from Caliph. I have told you, जिसको खिल्लत प्राप्त करना कहते हो. So then Caliph's representatives from Baghdad, so they came to Iltutmish's court. So in order to welcome the Caliph's representative, Iltutmish built a large gate, and on the gate the various paintings were inscribed, various figures. So it means कि it was going to reflect कि पेंटिंग्स एग्जिस्टेड देयर. अब ना तो हमें वो गेट मिला और ना वो पेंटिंग्स मिली, लेकिन मिनहाजु सिराज लिखा है कि जब इल्तुतमिश ने खलीफा से खिल्लत प्राप्त किया, यानी आदेश पत्र प्राप्त किया शासन का, मैं आपको बता चुका हूं, तो खलीफा के कोर्ट से आए थे कोई रिप्रेजेंटेटिव्स उसको खिल्लत देने. तो उसके स्वागत में उसने एक ऐसा गेट बनाया था जिसमें बहुत सारी चित्रकारी थी, तो होगी. दूसरा एग्जाम्पल है कि आमिर खुसरो लिखता है वो कि जो इल्तुतमिश, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सक्सेसर और सन था, जिसका नाम आपने मुबारक शाह खिलजी सुना है, तो वंस मुबारक शाह खिलजी ऑर्गेनाइज्ड अ feast or a celebration, he did some celebration in which a number of tents were erected, and the tents were portrayed through very good quality paintings. मतलब उसने बहुत सारे ऐसे टेंट लगाए जिस टेंट्स में कई तरह की चित्रकारियां थी. तो अगर ऐसी चित्रकारी थी तो इसका चित्रकारी दिल्ली सल्तनत के अधीन भी था. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, शमसे सिराज अफीफ, who was the historian of Firoz Shah Tughlaq. So he has mentioned कि फिरोज शाह तुगलक removed and destroyed so many paintings. If Firoz Shah Tughlaq destroyed so many paintings, so it was reflective of the fact that it means कि paintings had existed at that time, which were later destroyed by Firoz Shah Tughlaq. तो भाई अगर फिरोज शाह तुगलक ने कुछ चित्रकारी को ध्वस्त किया या उसको रिमूव किया, तो चित्रकारी थी तो तभी तो रिमूव किया, तो इसका मतलब है कि चित्रकारी उस समय भी थी, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली एब्सेंट था. और एज द मिनिएचर पेंटिंग यू फाइंड कि द होली कुरान वाज डेकोरेटेड विथ, मतलब डिफरेंट ढंग से उसको सुलेखन बोलते थे, कोलियोग्राफी. कोलियोग्राफी का मतलब है कि बड़ी सुंदर लिखावट से सजाया जाता था. सुंदर लिखावट भी सजाने की एक पद्धति होती थी, उसको कोलियोग्राफी बोलते थे. तो इट वाज पॉसिबल कि पॉसिबली कुरान और सम टेक्स्ट वेयर थ्रू कोलियोग्राफी इट वाज डेकोरेटेड. सो यू फाइंड हियर ऑल्सो, यू फाइंड एन एग्जाम्पल. अब नाउ कम टू मुगल पेंटिंग्स. यू नो, द मुगल पीरियड विटनेस्ड वेरियस फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग्स. बहुत सारे फॉर्म्स आपको मुगल पीरियड के पेंटिंग्स में मिलेंगे. 3 आपको उसको मिलेंगे. जैसे देखिए, मुगल पेंटिंग्स, डिफरेंट फॉर्म्स. अब डिफरेंट फॉर्म्स में देख लीजिए. अब डिफरेंट फॉर्म्स में आप देख लीजिए. एक फ्रेस्को पेंटिंग, और मूरल पेंटिंग. मूरल पेंटिंग. दूसरा है मिनिएचर पेंटिंग.
miniature painting, and third one is portraiture painting. पोर्ट्रेचर पेंटिंग. तो देखिए, फ्रेस्को पेंटिंग मीन्स कि ऑन द वॉल ऑफ द मॉन्यूमेंट्स द पेंटिंग्स वेर ड्रॉन. So once the paintings are being drawn on the walls, so paintings which were being drawn on the walls, so that these paintings were called fresco paintings or mural paintings. उसको फ्रेस्को या मुरल पेंटिंग्स बोलते थे. दूसरा कहलाता मिनिएचर पेंटिंग्स. मिनिएचर. So what was the specificity of the miniature paintings? Here I have to inform you कि बेसिकली वो बुक के फॉर्म में होते थे, और जैसे बुक बाइंडिंग की जाती है ना, तो एल्बम तैयार करते थे उसको. सो इट वाज कॉल्ड मिनिएचर. अब होल रामायण, स्टोरी ऑफ रामायण, इट वाज एक्चुअली टोल्ड थ्रू पेंटिंग्स. The whole of the story of Mahabharata, it was told through paintings. So that was called miniature paintings. And third one, portraiture painting. Portraiture paintings means कि now on the wall you are hanging a painting, and in this paintings there is the figure, chitra. That is called portraiture painting. So portraiture painting was introduced in India as the result of European influence under Portuguese. Because although Portuguese were not much progressive in their outlook, but after all they were associated with Europe. So this 16th century was marked by the period of the 16th century of Europe was marked by the rise of Renaissance consciousness. So this Renaissance consciousness was visible even in portraiture painting, because Renaissance basically emphasize the identity of an individual. In portraiture painting, you will find the growing importance of an individual, which was the product of Renaissance. मतलब जो पुनर्जागरण होता है ना, वो व्यक्ति के महत्व पर बल देता है. और जब आप छवि चित्रकारी या पोर्ट्रेचर पेंटिंग करते हो, तो कहीं ना कहीं उस पोर्ट्रेचर पेंटिंग के केंद्र में एक व्यक्ति होता है, एक इंडिविजुअल होता है. तो उसमें कहीं ना कहीं इस पर यूरोपियन रेनेसां का इंपैक्ट जो पोर्चुगीज के थ्रू आया है. अब मैं आपको बताऊं कि जो फ्रेस्को पेंटिंग है, तो इन फ्रेस्को पेंटिंग यू विल फाइंड हियर कि इन द वॉल ऑफ द डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स यू विल फाइंड दिस फ्रेस्को और मुरल पेंटिंग. बट अंडर अकबर यू कैन से, हियर आई हैव टू टॉक अबाउट द स्टोरी ऑफ बाबर हिमसेल्फ. बाबर वाज आल्सो attracted towards paintings, but hardly did he find the time to inculcate his interest here in this field. So he did nothing substantial in the field of paintings. Humayun was having a specific taste for paintings, but he was too much busy in his own affairs, and he was too much busy in his political affairs which occurred during his period. So he was always in the battlefield and in the moment of conflict, but he was having the taste for paintings. And whenever he went to the Persian court and he returned from Persian court, so along with him, he brought two important and two famous painters of the time. The name of the famous painters were Mir Sayyid Ali and Khwaja Abdul Samad. मतलब कि जब हुमायूं जब शाह के दरबार से लौट रहा था, तो अपने साथ वो दो प्रसिद्ध पेंटर्स को लेकर लौटा था. उस पेंटर्स का नाम था मीर सैयद अली एंड ख्वाजा अब्दुल समद. ख्वाजा अब्दुल समद, इसके बारे में कहा जाता है कि हुमायूं ने हमजानामा एक कहानी थी, स्टोरी थी. देखो आप समझना, मिनिएचर पेंटिंग से मतलब है जो कहानी है वो कहानी लिटरेचर में न कह के अगर पेंटिंग्स में वो कहानी कही जाती है तो उस कहानी को हम कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंड दैट इज डिस्प्लेड थ्रू पेंटिंग्स. तो जो कहानी पेंटिंग्स में कही जाती है, दिस कहानी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो पेंटिंग्स में कहते हैं, तो वो अब हो गया पेंटिंग्स. तो ये मिनिएचर पेंटिंग्स का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन फीचर इज पोर्ट्रेचर पेंटिंग्स, जो आई हैव डिस्कस विथ यू. तो
मीर सैयद अली है, ख्वाजा अब्दुल समद है। तो ये मिनिएचर पेंटिंग्स का स्कॉलर था, माने वो छवि चित्रकारी। तो हमजा नामा एक कृति है, जो हमजा एक योद्धा था अरब रीजन का, तो उन्हीं के इर्द गिर्द ये हमजा नामा को महान योद्धा के इर्द गिर्द बनाई गई थी, तो उसको हमजा नामा बोलते हैं। तो उसको इसी ने बनाया था, मीर सैयद अली ख्वाजा अब्दुल समद। और खानदान तैमूरिया मतलब पूरे तैमूर वंश की जो जितने भी रूलर्स हैं, they became the subject of the painting. So even the Khandane Taimuria was drawn by Mir Sayyid Ali and Khwaja Abdul Samad. Although they came along with Humayun, but Mir Sayyid Ali and Khwaja Abdul Samad continued even under Akbar. Akbar was a great connoisseur of in the paintings. You can say he was having a specific interest for paintings. So Abul Fajr informs us that in Akbar's Tasveer Khana, there were 17 painters. मैंने अकबर के तस्वीर खाने में 17 चित्रकार थे. Dashwant was the, you can say, most prominent among them. He was a leading painter. Dashwant, he was a Hindu, and most of the painters among the 17 painters were Hindu. And then in Akbar's time, one is a specific thing I have to inform you, कि in Akbar's time, painting was not an individual effort. Paintings reflected collective effort. Means that the different kalakars combined together, they are drawing paintings. And you will be surprised to know that sometime even the different artists were making the different part of the same painting. मतलब अकबर के टाइम में क्या होता था कि जो डिफरेंट जो आर्टिस्ट होते थे, वो आर्टिस्ट एक ही पेंटिंग का, जो एक ही कोई अगर पेंटिंग है तो उसी का अलग अलग पार्ट अलग अलग आर्टिस्ट बनाते थे. और मैं इसमें एक दिलचस्प बात बताऊं कि पेंटिंग्स जो होता है नॉर्मली पेंटिंग्स, सो पेंटिंग्स आर सपोज टू बी अनइस्लामिक. व्हाई? तो अंडर इस्लाम, इफ यू आर पोर्ट्रेइंग एनी लिविंग क्रिएचर, so that is running counter to the basic essence of Islam, because under Islam only Allah is having the privilege to produce any living creature, and you are just trying to recreate the living creature in paintings. It means you are just trying to intervene into the privilege of Allah, so that is not permissible under Islam. But you will be surprised to know that कि Akbar tried to justify the whole painting bid and painting activities in another way. And Akbar has made a very famous statement. Akbar told कि I think कि paintings are the best means for realizing God. Paintings are the best means for realizing God. Whenever an artist is making the one part of painting, and he is making a living creature, he makes the different parts of the body, he makes the hand, mouth, nose, eyes, etc. And after finishing his painting, then he comes to realize that I can make anything, I can give a physical finishing to painting, but I can never infuse a life into this painting. It is after all a dead person. So then he was compelled to recall Allah, कि only Allah is having the privilege to infuse a life into this painting. So he was compelled to recall Allah suddenly. मतलब वह जब पेंटिंग्स के अलग अलग, जब उस कलाकार जब बनाता है, उसके शरीर के अंग को बनाता है, एक जीवित प्राणी को बनाता है, तो सब कुछ को बनाता है, लेकिन तब उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं भले ही इसके अंग को कितना ही अच्छी फिनिशिंग से बना लूं, लेकिन मैं इसमें जान नहीं डाल सकता, क्योंकि जान डालने का विशेषाधिकार केवल अल्लाह को है. तो बरबस उसे अल्लाह की याद आ जाती है. तो अकबर ने इसकी पूरी धारणा को उलट दिया था. उसने कहा था कि मैं मानता हूं कि एक आर्टिस्ट में
को अल्लाह को जानने की अद्भुत क्षमता होती है, क्योंकि उस पेंटिंग्स के माध्यम से ही वो अल्लाह को इतना बेहतर समझता है जितना कोई नहीं समझता। ठीक है। दूसरी बात आप देखोगे कि जैसे आपने आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स में अकबर में आपने देखा था इंडो इस्लामिक एलिमेंट्स, तो यहां पर फ्यूजन बिटवीन अकबर के पेंटिंग्स में आपको फ्यूजन बिटवीन पर्शियन एंड इंडियन एलिमेंट्स माने अकबर के पेंटिंग्स में आपको दोनों के बीच का फ्यूजन दिखेगा। अकबर के पेंटिंग्स में आपको दोनों के बीच का फ्यूजन दिखेगा। वह फ्यूजन पर्शियन एलिमेंट्स और इंडियन एलिमेंट्स में होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ थीम्स। यू विल कम टू रियलाइज दैट कि इन पर्शियन पेंटिंग्स normally the theme was the theme of hunting. Normally you can say you will find the theme of hunting, the theme of court, the theme of war. मतलब वहां पर जो ईरानी कला होती थी उसका जो विषय होता था, वो विषय क्या होता था? दरबार का चित्र होता था, युद्ध का चित्र होता था, शिकार का चित्र होता था। और इन इंडियन ट्रेडिशन देयर वाज द एम्फेसिस ओवर द रिलीजियस थीम्स लाइक रामायण, महाभारत एटसेट्रा। सो इन अकबर्स पेंटिंग्स यू विल फाइंड द सिमिलेशन बिटवीन द टू, द रिलीजियस सीन्स एंड द रिलीजियस थीम्स एज वेल एज द कोर्ट सीन्स। सेकेंड वन थिंग कि इन Persian painting there was the use of the wide brush, मैंने उसके चौड़े ब्रुश का प्रयोग होता था ईरानी पेंटिंग्स में। एंड इंडियन पेंटिंग्स देयर वाज द यूज ऑफ राउंड ब्रुश, तो आपको अकबर के पेंटिंग्स में राउंड ब्रुश का यूज हुआ। देन यू कैन सी इन इंडियन पेंटिंग्स देयर इज द लार्जर यूज ऑफ रेड एंड ब्लू कलर। रेड एंड ब्लू कलर्स वेयर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ इंडियन पेंटिंग्स। तो रेड एंड ब्लू कलर्स का भी इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। तो यह भी है। तो यहां पर आप देखोगे इंडियन एलिमेंट्स का प्रोमिनेंस है। एंड थर्ड थिंग, इट वाज ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड यू विल फाइंड कि देयर वाज द यूरोपियन इम्पैक्ट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द पोर्चुगीज इम्पैक्ट एंड अंडर यू कैन से द ड्यू टू द रोल ऑफ पोर्चुगीज, द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स वर एडेड इन अकबर्स पेंटिंग्स यू कैन से। One is called portraiture paintings. It was under the influence of European Renaissance. मतलब अकबर के टाइम में दो स्टाइल ऐसा जुड़ा है जो यूरोपियन पेंटिंग्स के प्रभाव में है। एक तो है छवि चित्रकारी, पोर्ट्रेचर पेंटिंग, एंड द सेकेंड वन इज टेक्निक ऑफ हॉट सर्टेनिंग। Technique of foreshortening. अब what is the technique of foreshortening? I have to inform you. Technique of foreshortening में है कि मतलब दूर की चीज को छोटा और नजदीक की चीज को बड़ा बना के दिखाना। जैसे आप एक ही वॉल पर देखोगे या एक ही फिगर में, चित्र में देखोगे कि कुत्ता बिल्ली का पीछे, माने डॉग इज chasing the cat. How is it possible to reflect in the paintings? Because here the cat will be just represented in the, you can say, very smaller size and dog in the larger size, so it is clearly visible कि dog is near and cat is very far off. तो ये इस तरह से उसको टेक्निक ऑफ फॉरशॉर्टेनिंग कहते हैं कि जिसको बड़ा दिखाना है, बड़ा नजदीक की चीज को बड़ा दिखा दिया और दूर की चीज को छोटा दिखाकर दोनों का डिस्टेंस दिखा दिया। ये टेक्निक उसने यूरोपियन पेंटिंग से आई थी। एंड ड्यूरिंग अकबर्स टाइम यू विल फाइंड कि अ नंबर ऑफ बुक्स वर पोर्ट्रेड जस्ट लाइक द मिनिएचर पेंटिंग। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, story of Panchtantra, so all became the subject of Nal Damayanti. So all the stories that became the subject of paintings you can say. कालिया दमन, जो E.R. दनिश के नाम से है, जो कालिया दहन नाग को कृष्ण ने नाथा था, तो कालिया दमन. So all were portrayed in the paintings. I am just observing here. This is the example of Akbar's paintings. You can portraiture paintings. That is the portraiture painting. Emperor Jahangir's album assembled. एल्बम है।
मुगल पेंटिंग्स देखो, that is miniature paintings. Paintings during Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb, I had to discuss this aspect. So today, my students, I am stopping here. I will finish it tomorrow, and apart from that, I will provide you music and some extra material tomorrow. So after finishing it, I will do the music part as well and some other part. So I'll just discuss with you. So I'm stopping here, my students. I'll just see you the next day. Thank you.